डेफिनेशन पता है? नहीं। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। यस, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वैसी रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाई डज इट से ओके, मे बी इट इज डीवी बाय डीटी। डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू, सॉरी, डी डब्ल्यू बाय डीटी। Yes, that is correct. Okay, so we will do concept of power. मैं पावर को क्वेश्चन कॉपी इंटीग्रेट करते करके चलो. हमें नहीं सर, पावर को इंटीग्रेट करके हमें वर्क डन मिल जाए। P dt. Yes, you're right. This is P dt also. Obviously, power, for example, may be variable. The way you deliver power. So if you can do work on a body, so you can supply it work, but you can also deliver the same work at different rates, and which is what the power is all about. If you delivered the work, for example, you're delivering 60 joules to a body in 1 second, you're saying I'm delivering 60 watt power. Okay, so 1 watt is 1 joule of work delivered to a body, mechanical work, 1 जूल पर सेकेंड। 1 joule per second, right? So, for example, there is a situation where the power is being delivered at 2t square rate, joule per second, right? And they ask you what is the work done in 5 seconds. So, इंटीग्रेट कर दो। so it's a every second different work is being done. So 2t square dt, and this is 0 to say 5 seconds. So this is 2t cube by 3 divided by 0 to 5. 2 by 3, 125 minus 0 is equal to 250 by 3 watt joules. सर, हाँ जी. अगर एक पावर टाइम ग्राफ दे रखा है हाँ हाँ. तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा उससे हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। Correct. This is what it is. You're right. So if ठीक I है। tell you there is a this graph which is power being delivered, okay, like this. So this is work, sorry, this is power, and this is time. It starts from here and ends here. If you want to find the total work done, the total work done is definitely what you said is the area under the curve. I'm not sure ठीक। ninth में power का concept है कि नहीं है? है, नहीं है। थोड़ा सा है, I think. So you can find the area of this and you can get the answer. So you're right. Can be a parabola. Maybe they deliver power is a function like this. Okay, and so you have to deliver the work in these many seconds. So this is your work done. This is your power, and this is your time. Okay, let me just start doing numericals. I think you have the basic right that you're delivering work to a body at a certain rate. So, okay, so NCERT class 11th work power energy. Okay, PDF. So you can have the PDF directly. Alright, so let's do some numericals on this topic. Knowing the only thing is so we have done some numericals on this. हमने पैराबोलिक नेचर पे स्प्रिंग का कर लिया क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का. ओके, इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों दे दिया? एग्जाम एयर मॉलिक्यूल डीएनए. ओके, वी विल डू सम, कुछ नहीं है इसके अंदर. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर
Yes, so here is a numerical on the concept of power. Pretty straightforward, but इसमें tricky numericals are there जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, बाकी तो कुछ ट्रिक है नहीं इसके अंदर. So let's do this question here. It प्रोफेसर loads. हमने 10th में भी इलेक्ट्रिकल पावर का किया था. हाँ, थोड़ा सा इट इज़ अगेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग सप्लाइड पर यूनिट टाइम. जैसे घर में बल्ब होता है 40 वॉट्स का, इट कंज्यूम्स 40 जूल्स पर सेकेंड. सो देयर ऑल्सो द सम टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग डन, बट दैट इज नॉट द कन्वेंशनल फोर्स वाला वर्क, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क. जूल तो दोनों ही, एनर्जी रिमेन्स जूल्स. Okay, here is a question. Electrical energy is getting converted into mechanical work. Motor runs through electrical energy. You have to pay for it and get work out of it, which is your mechanical work. Lift को ऊपर नीचे करने के लिए you are using the concept of motor. The frictional force opposing the motion is 4000 न्यूटन. किस चीज का फ्रिक्शनल फोर्स? किस चीज का? Okay, so there is a friction available when the lift is going up. Maybe there is a surface which it touches, and जो भी tension मिल रही है, it is being opposed by a friction. हो सकता है वॉल्स हो सकता है जिस तरह से बॉडीज होती हैं. फ्रिक्शन इज वेरी कॉमन इन मूविंग पार्ट्स. पुल्ली पे हो, कहीं पे होगा. नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल, सो देर इज अ डिसिपेशन. तो जो मोटर है उसको ना केवल यूजफुल वर्क करना है, बट ऑल्सो फ्रिक्शन को भी वही कॉम्पनसेट करेगा. खर्चा बढ़ेगा. हो सकता है बुड्ढी लिफ्ट हो, द लिफ्ट इज वेरी ओल्ड एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी to useful work, percentage wise it is not very efficient, because wasted work is also, who has to provide the work being done against friction? Motor has to provide it. खर्चा तो मोटर का ही आएगा आपका. तो बेटर है कि एलिवेटर को रिपेयर करा के फ्रिक्शनल चेक करा के उसका कम करा जाए फ्रिक्शन, सो दैट लेस पावर एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड. बट every 1 second you will have to deliver more work to this, because every 1 second the friction also is consuming your electrical energy. It's moving with a constant speed. ठीक है. मतलब there's no acceleration. हाँ, can carry लिखा ना, can carry maximum, तो it moves with constant speed so that लोगों को acceleration ना महसूस हो. Most of the time a lift only runs with a यूनिफॉर्म, बहुत बड़ी 100 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो एक्सेलरेशन होती है, बट जनरली इट इज think no, make a free body diagram and see what's happening. Who will provide this kinetic energy to the lift? From where will you get it? Motor has to do everything, right? This is your motor. The motor moves and some mechanism is there and there is a मोटर किधर लगी हुई है? मोटर नीचे लगती है. रस्से लगे होते हैं, रस्से लगे होते हैं. वो रस्से जो है लिफ्ट को घुमाते हैं. मोटर लगी होती होगी कहीं पे अंदर यहाँ पर शाफ्ट में. ना नीचे होती है, या नीचे कहीं पे यहाँ लगी होती है मोटर. मोटर कैन बी एनीवेयर. इट्स अ रोटेशनल वे, राइट? यू हैव टू रोटेट दिस व्हील जहाँ पे वो बांध रखा है ऊपर, राइट? और ये व्हील, ये जो है, ये वाला रस्सा ऊपर नीचे आ रहा है बेसिकली. तो यू नो काइनेटिक एनर्जी चाहिए मुझे लिफ्ट हिलाने के लिए. कंप्लीट, आई नीड इट, आई डोंट हैव अ चॉइस. So what are the things against which you need and do you also see that position is also
if it is moving with a constant speed, who is providing it with speed? The motor. Motor has to, half mv square will come from the motor. And how will you overcome the frictional force? The frictional force also has to be provided by you. I mean, to overcome frictional force, you need some. So if you notice, work done is given by F into T, right? Yes. And the power is W by T, right? तो जो Yeah. work done होता है, that is F into S. Obviously, I'm assuming cos 0 है, okay? So S by T is velocity. So power is also force into velocity. Remember that. So Okay. if you are pushing a body with a certain force and that body is moving with a constant velocity, the power being used to do that. So 4,000 Newton multiply by 2, 8,000 watt. तो यही देना है आपको. You have to supply this with 8,000 joules just to overcome the friction. ये भी तो चाहिए ना. Every 1 second you have to deliver That's not 8,000 minimum joules. पूछा है. Okay. है ना. ठीक है. Friction तो हमेशा ही रहेगा. So one you have to deliver this, which is the useful part of it, right? Every second you will have to deliver this. Okay. Okay. So this is, if I say this is 1800 kg, can I say that the force is 1800 into g? mg है जिसको मुझे Yes. लेके जाना है ऊपर, right? MGV. हाँ, mgv वो भी कह सकते हो. So that is the power to be delivered for you to overcome Earth's gravity. You said mgv, right? Yeah. And then additionally, you also need 8,000 joules per second. हाँ जी. So This is what the is it? total power. 1800 into 2 into This one. 10, 9.8 ले रहा मैं. Okay. So 8,000. So how much is it? 18,000, 36,000. 44,000. 44,000. So every second you have to deliver 44,000 joules. 44,000. 44 kilowatts. That is correct. So your motor, when you buy it, be very careful that you don't end up buying a motor which is 20 kilowatt. वो बंदा आपसे बोलेगा लोड क्या है. If you buy a 20 kilowatt motor, fail. You won't be able to deliver those many joules per Lift ही नहीं second. हिलेगी. Or maybe the speed will become very less, right? V will go down. You will not be able to. But if you say 2 पे compromise नहीं करूँगा मैं, लोग आधे घंटे के बाद ऊपर पहुँचेंगे फिर, अगर speed कम हो गई तो. Very importantly. Got it? Yeah. So the delivery of work is to overcome dissipative part, and delivery of work is also for the useful part. Any doubts in your mind? No. नहीं सर. Okay. So you have कितना है हमारा आंसर? 44,000. ठीक है. Okay, let me ask you one more question. This question I'm giving you is very exam oriented question. थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन ये आपके स्कूल के पेपरों में बड़ी ऑफन पूछा जाता है. तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यू शुड बी हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लेट मी पुट इट दिस, द बिट ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? It doesn't really help you understand the concept of power, but it does tease you Maths. on maths. Yes. So your capability to integrate और थोड़ा बहुत f into v का समझ होना, it will test you there a bit. Not really too much, but थोड़ा बहुत करती है. So both these questions are very important. Beginner level में सबको करवाया जाता है कि please get comfortable with the maths also of this topic, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आता है पावर का तो जनरली दे विल. Oh, okay, 6.10. Do that. Let me copy it correctly. I think I've not copied it nicely. Unsolved here. And let's do the other one also.
सर हाँ जी बताओ. ये I'll just copy it. Just give me 1 second, and I will just copy it, and we will discuss it. हाँ ठीक है, दूसरा भी हो गया क्वेश्चन कॉपी. Alright, 6.10. Let's do that first. बाद में करते हैं इसको. So you have वो है constant power. So बॉडी constant power मतलब 40 kilowatt is being supplied to it. So you have to find displacement versus T relationship. तो उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशनशिप है, नोइंग दैट द पावर बीइंग डिलीवर्ड टू द बॉडी इज कांस्टेंट. सो पावर इज वर्क बाय टाइम. So you know this is a constant, right? Some fixed number. So how much is this work done? Force into distance upon time. And what is force? Mass into change in velocity upon time. So t square into distance, right? So this is a constant. So this is basically distance and displacement are one and the same thing because it's the same straight line. ठीक है? तो so it is unidirectionally and it is constant power. So if I have to write displacement, how will I write displacement? And what is velocity, by the way? Velocity is also mass, ये change in displacement, मतलब change in position, displacement divided by time. So t cube, और ये भी s आ गया, ये constant आ गया. So s square m into s square is equal to some constant number into t cube. So s is equal to k by m. ये तो fixed है, constant of proportionality. This is mass, ये भी fixed है. And this is t square by कितना है, सॉरी t square ही लिख दिया मैंने, t cube है, सॉरी y t square. Let me remove the wire. I think okay, yeah, t cube. टी क्यू टी बाई थ्री टी बाई S थ्री is yeah, टी रेशो 3/2. right. So if you're delivering constant power and you, so basically you're saying it's a uniform acceleration case. तो v minus u by t लिख लिया, और this is the relationship. Go to 6.9 now. A body is initially at rest and undergoes one-dimensional motion of constant acceleration. Power delivered to it at time t is proportional to Something very similar.
करना वैसे ही है जैसे मैंने करा है, मैंने रिवर्स करा है। यू हैव टू ऑल्सो नीड टू डू द सेम थिंग, नॉट नॉट हार्ड। ठीक है, मिलता जुलता है। बिगिनर्स डेफिनेटली फाइंड इट बिट डिफिकल्ट, बट थोड़ी सी अगर कंसंट्रेशन हो तो हो जाता है। कुछ इस टाइप से करा है। टी स्क्वायर आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेट मी चेक। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। What is this? V minus U. This is delta V, right? वी माइनस, वो एक्सेलरेशन है। Acceleration is constant. So you have to find the relationship between power and time, right? हाँ जी। ठीक है, the power T की टर्म्स में निकालना है। W by T F mass into V, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एक टाइम और आ डिस्प्लेसमेंट जाएगा। नहीं, वेलोसिटी है। हाँ, मतलब उसको लिख सकता हूँ ना मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एस आई कैन, बाई। हाँ, v minus u. If the acceleration is constant, v square minus u square is equal to 2as. तो v फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कॉमन आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस तो डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगी ना, तो टी क्यू बन जाएगा नीचे। एस पी कट जाएगा। है, कटेगा नहीं, एस एस बाई टी बन जाएगा ना ये। व्हाट डज दिस बिकम? You have to deliver power, so this is F into S. So I'm saying V minus U can be written as displacement, so uniform है ना, sorry, S is equal to UT plus half AT square. So you have to write एस इक्वल्स टू। what is delta U by delta U आ गया ये, this is change in velocity upon T square. चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? a इंटू टी ना, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। यू कैन राइट दिस एज a इंटू टी। a कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, सो सो v बाई टी विल बिकम a। डिस्प्लेसमेंट को भी हम वी टी बाई टू लिख सकते हैं। v t बाई टू, s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, स्टार्ट्स फ्रॉम, अच्छा रेस्ट टी रेस्ट। है। ओके, सो यू आर डिलीवरिंग to it is proportional to t square। ओके, हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, v बाई टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a को लिख दिया, हाँ v बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। पावर डिलीवरी इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t ये हाफ है, दिस इज टी स्क्वायर। ठीक है, सब what is the work done you have done in t time? You have to calculate the work done in t time, right? Work done will be force तो पावर into, डिलीवर टू डू इट एट टाइम टी। हाँ, पावर निकालनी है ना। what is the power being delivered to it, मतलब with respect to time, फोर्स टाइम इनटू के साथ क्या वेलोसिटी। रिलेशनशिप है? तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। ई इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। So ई कैन a रिटन एज and v, a is fixed,
mass is fixed, and velocity is continuously changing by an amount at, है ना? Mass into a into t. This is force, this is v is equal to u plus at, तो ma square t आ गया. Yeah. Okay. So P is directly proportional to T. हाँ, Okay. It's a is T. fixed, a is constant, mass is constant, proportional to P time. is okay. P is equals to Yeah. okay. P is proportional to t. मतलब it's a variable power being That. delivered. So in a uniform motion, the rate of delivery of work, अगर आपको निकालना पड़ जाए, तो it's a P versus T graph is a line with a slope of ma square. Okay. So variable power being delivered. Uniform acceleration में variable power is being delivered. Time dependent है. हर instant पे अलग power का rate आ रहा है. क्योंकि वो जो चेंज इन वेलोसिटी होती है हर सेकंड में अलग होती है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एवरी सेकंड यू गेन मोर वेलोसिटी बिकॉज अर्लियर वेलोसिटी वाज हायर तो यू स्टार्ट फ्रॉम अ हायर वेलोसिटी एंड देयरफॉर एंड एट अ हायर वेलोसिटी सो डेल्टा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फर्स्ट सेकंड में जितना सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है ज़्यादा होता जाता है ना वो बिकॉज यू स्टार्टिंग विद अ हायर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी so you're traveling more distance so more power is required so it's a variable clear Huh. okay good do question number इसमें प्रिंट हुआ है 15th सॉरी नहीं आया let me copy the question I hope there is no collision okay अभी collision नहीं है इसमें have they given any assignment in the school pertaining to this chapter Let me check. ना चेक कर लेना भाई एंड में कोई प्लीज डोंट alright do 6.15 very again very exam oriented question एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मतलब आपने 100 दिया मिला लेकिन सिर्फ 30 inefficient 70 got wasted so if you tell me you know I'm 30% efficient for every 100 I give you you will only use 30 70 you will waste so if you want to achieve 90 joules I will have to give you 300 joule to be so that you can get 90 joules because you waste 70%
Sir, in 1 minute it can fill up 2 meter cube. Okay, let's think कैसे करा. Where is the solution, please? कहाँ लिखा हुआ है? लिखा कहाँ है भाई? Okay. नहीं आ रहा मुझे, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. सम क्वेश्चन तो समझ में आया होगा. आई थिंक द कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज नहीं करने आ रहा, राइट? हाँ जी. ओके. वेयर इज द प्रॉब्लम यू थिंक? ये तो पक्का है कि व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. सो यू आर एलिवेटिंग द लेवल ऑफ वाटर. अगर वाटर हायर पोटेंशियल पे होगा तो लोअर नीचे आने की कोशिश करेगा अपने आप ही. और दिस इज व्हाट हैपेंस इन बिल्डिंग्स. वाटर इज स्टोर्ड इन अ ओवरहेड टैंक. So this is your tank, this is your motor, okay? The pipes are there which fill up the tank. So what you want mgh to be delivered to you by the motor. So the motor is the machine which will convert electrical energy into useful work done, and that work will appear in the form of potential energy, which is mass, means mass of the water. If you notice, the density of water is known to us to be 1000 kilogram per meter cube. And how much water do we want? 30 meter cube, right? So which means essentially we need 30 kilograms. 30 किलो पानी चाहिए हमको 15 मिनट के अंदर. सो वी नो टाइम ऑल्सो, जो हमारा मीटर होगा वो 15 मिनट के लिए ऑन रहेगा, राइट? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी यूज फॉर 15 मिनट्स. सो 15 मिनट के हिसाब से करेंगे. और एफिशिएंसी इज ऑल्सो नोन. इट्स अ वेरी बैड मशीन. फॉर एवरी 100 जूल्स यू गिव, it is capable of only giving you 30 joules of useful work. So सबसे पहले let's calculate how much useful work we need, and then we will say it is only 30%. तो बैलेंस 70 भी निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तो बोलेंगे टोटल तो इतना देना पड़ेगा क्योंकि यूजफुल वर्क 30% ही था. तो पहले सिर्फ 30% ऑफ द इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो यू हैव 30 kilograms of water going up, so which is 30 into height is 40, and 30 kilograms you need, which is 30 meter cube. This is 30 into what? 40 meters height. mgh, m and g. Okay, so we have written mgh. So we know how much useful work we need. We need 12 this much. That's your mgh. Okay, and we know that this is to be delivered in 15 minutes. So I divided by 15 into 60. I cancel it, and this is 6 and 200. So this is 100 upon 3. So I actually just need 33.3 watts of useful part of the power to be delivered to me. But I know this is only 30% of the useful part, right? So this is 30% of the total which is coming should be 33.3, or let's say 100 by 3. 100 by 3, right? क्योंकि यहाँ पे if you see this machine, if you give it x, it will only be able to give you useful x by 3, and this useful x by 3 is mgh, right? So if it is time divided by time divided by time,
right? So 30% of the useful work which you just calculated, 30%. So that means the total power which it requires every second it has to deliver 100 by 3 into 30 by 100 is equal to 10 raised to power 4 and 90. So this is your 10 raised to power 3 divided by 9 watts. ज़्यादा है. So if you want to fill this up, 30 kilogram water has to be taken to a height of, that means so the machine did supply energy, but because of the internal winding and poor mechanical parts which rotate and revolve, the machine is not able to use the energy which is supplied to it. So अब बिजली के पैसे देने पड़ेंगे 100 जूल के, मतलब 100 watts for every one second, but useful work you will get, the mechanical work it can do is only 30 joules, and that 30 joules has to lift the water up and take it here. 30 meter cube of water was 30 kgs, which meant in 15 minutes, this is the total work which is done by you. Okay, useful part of it. This is useful because it appears in the form of potential energy. And then the rate is then divide this by the time. So you have to be 12,000 divided by time is your power, which is required, useful power. But it is only 30% of the equation. So we've calculated this part. Okay, I need 100 by 3 joules per second. But so this is only 30% of the total. So if this is T, I have written 30% of this total. 30% of this total should be this amount, which I calculated above using work done getting converted into potential energy of the water. यहाँ पानी भर गया और पानी का जो टोटल पोटेंशियल है 40 मीटर के हिसाब से ये निकाल लिया मैंने. Gravitational potential. I think the immediate thought process when you see height, your immediate thinking should be, okay, so the work is getting converted into GPE, gravitational potential energy. ठीक. ठीक है? ठीक. And efficiency, I hope you understand efficiency now. If I teach you 100%, you get 22 marks. Right? So how efficient are you out of every 100 taught? 70%, 71%. 28% of learning goes as waste. So your efficiency is 72. If I teach you 100 and you get 100, you're 100% efficient machine. Efficiency का मतलब समझ में आया? हाँ जी, समझ आया. Okay. Inefficiency, machines की होती है efficiency and all that. All right. Question number 6.13. वो रेन ड्रॉप से क्या प्यार है? Gravity again, right? हाँ जी. 5 meter above the ground. Potential energy. Yes. वहाँ पे थी उसके पास stored थी. Now it falls with decreased acceleration. क्योंकि हवा जो है उसका friction होगा, viscous resistance. और धीरे 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 the velocity is reduced to half. और उसके बाद the velocity is fixed and then it comes with a uniform velocity. गिरते गिरते उसकी वेलोसिटी बढ़ के एक टर्मिनल वेलोसिटी पे आ गई और फिर वहाँ पे वो फिक्स हो गई और फिर वो फिक्स्ड वेलोसिटी से नीचे जा रही. क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ. फर्स्ट हाफ में यू हैव विस्कस फोर्स reaches the highest velocity, and then in the second half there is no change in the velocity, doesn't slow any further. So pehle to we should know what is happening in the first half, right? Some kind of variable force is acting on the drop. So if I were to draw the diagram of a drop, so let me just keep the question in perspective so that we don't lose sight of the question. Okay, how to look at a question. जहाँ dissipation हो रही है, फिर velocity constant हो गई, so on and so forth. Then how do we look at energy getting converted
और फ्रिक्शन में तो डिसिपेशन है, तो उसके बाद डिसिपेशन नहीं हो रही है, राइट? सो वन पार्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स, the second part is first part is non-conservative force because you have viscous force also available. Okay, so that we don't lose sight of the question, I will just do it on the right hand side. Okay, okay. A rain drop falls so and so. So let me just draw a diagram and see if we can understand it from diagram. So पहला half of the journey यहाँ पे गिर रहा है और कोई वेरिएबल फोर्स लग रही है, तो वेट से गिर रही है अपने, सो वेट इज ऑल्सो एक्टिंग थ्रू आउट. सो कहीं इंटरिम पॉइंट पे बना लेते हैं. सो ए टू बी इज फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, दिस इज वेट, and he says there is a viscous force, friction, some sort of friction. In fluids, the friction is called as viscous friction. So there is a frictional force. So यहाँ पे wastage तो हो रही है, okay? और फिर second half the journey जो है वो यहाँ पे it attains the highest velocity, so v terminal. And after that, there is no absolutely loss of velocity, which means I think it is under balance now, which means the viscous force at any point after this, which is upward, and the weight cancel each other. So the frictional force is variable 100%. पहले पार्ट के अंदर the frictional force loses the battle, the weight continuously accelerates it, and maybe it starts from rest, it drops. So it starts from rest, accelerates, not with 9.8 obviously because it is under the influence of a friction. So therefore the acceleration is not 9.8 but less. तो यहाँ पे वो अपना V max अटेन कर लेती है और फिर फ्रिक्शन ऐसे एडजस्ट हो जाता है कि फ्रिक्शन देन बिकम्स इक्वल टू आई थिंक द ग्रेविटी. Okay, because friction is continuously increasing, it appears, but at a certain, and so friction is seemingly dependent on velocity. As the velocity is increasing, as it is going down, the friction is also increasing, and at a certain velocity, which is a maximum velocity, the friction becomes constant and equal to weight. So here we can say mg has become equal to friction. So equilibrium like condition is there, and the inertia of motion is there, so it continues to move downward with a constant velocity. Okay, and that is called as V terminal in his language. So all throughout it falls, and it says half its original height. So this is 250 meters. This is also 250 meters, and then what happens? What is the work done by the gravitation in the first half and the second half? Or let's see, what is the work done by the resistive force in the entire journey? Or if it's speed, okay, so the speed is available to us. This is 10 meter per second. Very interesting. We know the kinetic energy with which it falls. The potential energy obviously will become zero, but it does have a kinetic energy, which is half mv square, and we know that it acquired a terminal velocity at a half the journey. So which means the terminal velocity is 10 meter per second, क्योंकि इसके बाद velocity has remained constant once the friction and gravity have balanced each other. Okay, so what is the work done by the resistive force in the entire journey in its speed on reaching the ground? Okay, and इसने बोल भी दिया uniform speed है thereafter. So this uniform speed actually from here onwards is 10 meter per second. उसके बाद balanced है situation, equilibrium में है, but the inertia of motion is making it come down. Okay, let's discuss what is the work done by the gravity throughout its so the work done by gravity is mgh, हाँ जी. right? So m is known for the drop. It is a rain drop of 2 mm. So it is density into volume into g into h. The density of water is 1000. The radius volume is 4 by 3 pi r cube multiplied by 9.8 10 lilo into 500. Right, so the potential energy is acting on it, and the net potential energy is, if you just look at one force, which is mg, and I then see the height through which it has dropped,
the height through which it is dropped is 500 meters in all. So ये तो हमेशा ही लगती रहेगी gravity, right? And let's talk about the second part. Okay, so now in the first half and the second half of the journey, very interesting. The gravitational force on the drop does what is the work done during the first half and the second half? Work done by the gravitational force. If it's an individual force, why is it different? मतलब मैं first half में हूँ, second half में हूँ, I am only mg, right? It has some potential energy stored in it. The potential energy is stored in it, and gradually as it is going down, the potential energy is reducing and kinetic energy is increasing. Right? यहाँ पे तो kinetic energy है ही नहीं. So this is a state where Ke is equal to 0, but here the Ke exists now. So the Ke at this point is half mv square, is half mv square. Half m is known to us. This is the mass. Velocity is 10 meters. So we know the kinetic energy here. Why do you think the work done from here to here just by gravity alone will be different? Only by one force, which is always downward. The displacement is in the same direction in both the cases. Even from here to here, the displacement is 250 meters and the force of gravity is 250. So, sorry, the displacement is 250. It's the first half and the second half. Yeah. I think it should be same. क्वेश्चन की लैंग्वेज में 4 लगी मुझे. किसमें? 6.13. फर्स्ट हाफ में? नहीं, 6.13 की. हाँ. क्वेश्चन लैंग्वेज क्या लग रही है? अजीब सी. NCERT लिखता है ऐसे, ठीक है. But we know, right, if there are multiple forces, each force is doing its own work. Yeah. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं हम इसमें वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी. ओके, व्हाट वाज द वर्क डन? सो पहली बात तो जो वर्क डन जो है बाय द रेजिस्टिव फोर्स, आई थिंक इज लाइक अ पैची रोड. इट इज नेगेटिव वर्क बिकॉज it is resulting in a loss. If you fall through first half like this, अगर आप first half में फ्रिक्शन सप्लाई कर रहे हो ऐसे, और आपकी यहाँ पे mgh है और यहाँ पे आपका हो गया mgh/2 प्लस हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, जो आपका मान लो इफ यू स्टार्टेड विद 100 joules and then you accelerated but not good enough acceleration and you reached here, what you realized here is that although you dropped by mgh/2, you have a velocity, the sum is not coming out to be correct, equal to 100 joules. तो half mv square निकालोगे और mgh/2 निकालोगे, तो mgh/2 is simple, right? 50 joule. But if you put half mv square calculation in perspective, half mv square will not come out to be 50 joules, which means to the 100 joule which is existing in the body here, there is a friction force which acted like a road. You entered the road with 100 joule of energy. When you went out of it, you lost energy because negative work was done on you. So frictional force did some negative work on you. So आप ये जो हम निकाल रहे हैं इसके अंदर, if you calculate the mgh at the point A, then you go through this patchy phase and you started with the energy of वो जो हमने लिखी है 4/3 pi r cube mgh. We know the total energy available here is this. Had this been a patch of only a conservative force, then the energy available here, which would have been mgh/2 plus kinetic energy, which is a new mechanical energy, would have been equal to mgh, right? कोई doubt ही नहीं है. The total energy has to remain conserved in a conservative field. But remember, this is not a friction which is coming, is not a conservative field. You're going to lose energy. So what you will find is, if you calculate this value, it will be much less than the total energy.
because negative work was done on you. You started with 100 joules, and when you हाँ जी. calculate this comes out to be 85 joules. Okay. That means when you started with 100 joules, a minus 15 joule work was done by the viscous frictional force, and you became 85, right? हाँ जी. So which means during the first half, you can calculate the easily what is the sum of mgh by 2 plus kinetic energy. Yeah. निकाल लोगे ये, और ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर से. V10 दे रखा है जो इसका अचीव हो गया हाईएस्ट. ये ड्रॉप का वेट है, और जो टोटल एनर्जी ऊपर है mgh, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसको. फाइनल इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी एट द मिडल पॉइंट. So right, this is a middle point. हाँ जी. Got it? So A and B and then middle point. So you see something is missing. I started with higher energy, but my energy at B is not getting conserved. Then you start going down. Now when you start going down, your friction and weight have become equal and opposite. Okay. Viscous friction is balancing. That is why it is going with a constant velocity. Right? So frictional force इसका वर्क डन कितना होगा? You are gaining kinetic energy. Huh? Yes. So how much was your initial energy here? You started with mgh by 2 plus some kinetic energy, right? Now Yeah. kinetic energy will not change because you are now at constant velocity. ठीक है. है ना? हाँ जी. But the potential energy will get dissipated because of the frictional force. सारी वेस्ट हो जाएगी, ये सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां गिरते ही what will you have? Only kinetic, right? हाँ जी. So इस motion में what do you have? You only kinetic, which is fixed. It is not changing. The velocity is fixed. ठीक है. 10 मीटर के बाद फिक्स हो गई. यहाँ पे जब V max आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे आके मिडिल पॉइंट पे, नाउ द वेलोसिटी इज फिक्स्ड, व्हिच मींस यू स्टार्ट फ्रॉम 10, यू एंड एट 10. ठीक है? बट mgh by 2 लॉजिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी ना, तेज होते जाना चाहिए था उसको. हाँ जी. But you lost complete mgh by 2 because of this. So whatever is your mgh by 2 actually is the, उसके आगे अगर आप नेगेटिव साइन लगा दो, is the work done by the viscous force. ठीक है. Any doubts in your mind? You have to see what is happening to different energies. From here to here, there was an acceleration. Half mv square बढ़ रहा था. यहाँ potential energy में नॉन यूनिफॉर्म थी काइनेटिक एनर्जी. yes. यहाँ चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिर mgh by 2 अगर रहता, कांस्टेंट हो जाती है. yes. तो कोई है ना जो डिसिपेट कर रहा है mgh by 2 को फ्रॉम b के ऑनवर्ड्स. Somebody is dissipating b at b. Whatever is the potential energy logically should have got converted into kinetic energy. And ये the speed एग्जांपलर है ये? नहीं, NCERT, नॉर्मल NCERT है ये. एग्जाम्पलर तो अभी शुरू ही नहीं हुई. But think about it, na? Most of the questions are dealing with dissipative part of it. ठीक है. समझ आ गया? Okay. All right. So one part I think which is used in class 12th, and this time they've introduced in class 11th is the concept of electrical energy, and not electrical heat energy को इन्होंने use कर लिया थोड़ा सा. I don't know what is the purpose, but it is very helpful to know. Nuclear energy भी दी है, chemical energy भी है. Heat के ऊपर इन्होंने थोड़ा formula दे दिया heat पे.
ये 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, MS थीटा। 9th में पढ़ते हैं ना, हीट, हीट। इवेपोरेशन, चेंज ऑफ स्टेट, ग्राफ होते हैं। वाटर पढ़ते हैं, वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल हो जाता है, वाटर फ्रीज हो जाता है। आई एम जस्ट सीइंग इसने कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, conservation of potential energy, conservative force पढ़ लिया हमने, force in which no work is lost, no dissipation, principle of conservation of energy, power. Okay, just seeing one question which I thought is very irrelevant. I don't know why they have given this. How will everyone know about this part? मोमेंटम के क्वेश्चन शुरू हो गए। बॉब, मोमेंटम कोलिजन। ऑलराइट, सो वन मोर क्वेश्चन। I'm going to the next page. I think this page is done with. लो जी, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक नो, नॉट दिस वन, काइनेटिक एनर्जी, विंडमिल वाला नहीं, दिस इज अ लॉन्गेस्ट वन। या आई वांटेड 6.20 एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली ये आया नहीं। लो जी, सिक्स पॉइंट टू जीरो। कहाँ पर है? करो जी। नहीं, किधर आया? ये रहा, पेज 2। पेज 2। Go to page 2, you will see it. आ गया। Here. Read it carefully. More of JEE Mains type of question than school level. NCERT का है? NCERT. बॉडी। फाइव मीटर रेस्ट हुआ माइनस हाफ क्या है? 5 meter. एक second. Let me just check. The question says five. This is some constant of proportionality. It's not acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो केस ही नहीं है।
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप देखो, उसमें तो एस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो लिंक ही नहीं होती एक्स है। ये तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो लाउड ही नहीं है लगाना इसमें। इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे वेलोसिटी इज मोर डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट पोजिशन। v इज इक्वल टू मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसमें भी v इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं u फिक्स रख लूं, v इज प्रोपोर्शनल टू s अंडर रूट एस। 2as होता ना तो v स्क्वायर आता, तो v वो भी नहीं है, ये तो अंडर रूट x पे नहीं, x रेज टू पावर 3/2 पे डिपेंडेंट है ये। तो सर हम डेल्टा के भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन। मेरा आंसर तो सी वर्क डन फॉर मी इज मोर ऑफ व्हाट work done is force into, basically it's F फोर्स into S. एफ इनटू एस। F is m into A and A is dv by dt. So मेरे को dv by dt चाहिए अपने वर्क डन में, और मेरे को v और x का रिलेशनशिप मालूम है। इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, आई विल गेट dv by dt इज इक्वल टू a 3/2 x रेज टू पावर 1/2 तो into dx by dt। तो मेरा ये v इज इक्वल टू वाला जो है, आई हैव टू यूज इट टू गेट dv by dt, क्योंकि मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगी ठीक है। वो इंटीग्रेट करने के लिए। So I should know how to take derivative of v is equal to a 3x by 2, right? So work done is equal to force into distance, displacement, let's say, okay? And direction is same, it's a linear motion and straight line. The cos 0 हो गया जी लो. So force is mass into dv by dt. It's an instantaneous force because the force will also become a function of velocity finally. dv by rate of change होता ही है. Instantaneous हो गया into say x, because we are using x for displacement, okay, where x is from here to here. It's a position actually. So the if I see v is equal to ax 3/2 at x, this is the velocity. So dv by dt is equal to a 3/2 x raised to power 1/2. Remember to write dx by dt here. So this is acceleration instantaneous as a function of, so let me write किसका function आता है देखते, अभी मैं लिखता नहीं, a some number, some value, we don't care about it, into 3/2 x raised to power 1/2 into v. This is also v dx by dt. So I know this is a into 3/2 x raised to power 1/2 into v. v तो मेरे को पता ही है क्या है, तो मेरा ये बेसिकली एक बार a फिर आ गया और x raised to power 3/2 फिर आ गया, राइट? सो ये आ गया आपका 3/2 a square x raised to power square. So this is your acceleration, instantaneous acceleration as a function of displacement. तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेरी एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस। मैंने सारे dv by dt को x में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरा जो टोटल एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे है एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन इज गिवन बाय 3/2 है, 3/2 a स्क्वायर सम नंबर, स्क्वायर ले लेंगे इसका, हम 25 लिख देंगे इसको, और x स्क्वायर. सो माई दिस इज माई f एंड आई मूव थ्रू अ डिस्टेंस dx. तो जिसको मैं बोल रहा था पहले, तो ये into dx है, मल्टीप्लाई बाय dx. Instantaneous force multiplied by small displacement. Okay, so this is my dw. If I integrate dw on both the sides, I will get w is equal to 3/2 a square x square dx. X is equal to 0 to 2. So this is 3/2 x square x cube by 3 0 to 2 ओके ठीक है। is equal to 3/2 a square. a तो पता ही है 25 है, तो this is 2 cube by 3 minus 0 cube by 3 is equal to 3/2 into a square, 25 8/3. So this is your work done. Joules.
through this journey. But हाँ वो वैसा नहीं था, मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर आ गए. Not that simple. Mathematical oriented. Absolutely, very JEE Mains oriented. Very JEE Mains. You had to have clear understanding of what's happening. How, if you understand this, what is happening? It's a variable, acceleration case and a dependence on x. Organizing thoughts was important. Physically, कुछ नहीं करना था. A body moved from this. You know, a bubble is coming down. Raindrop is कुछ नहीं. Okay, let's try question number 6.21. जो मैं नहीं करवा रहा एनसीईआरटी के खुद कर लेना. But broadly, my job is to open your mind, bring conceptual clarity. Once you have that, you go ahead and start solving. I will send out assignment the way I do. मत करना. Keep up your record. It was a great question to do. Intense question, right? So the velocity is perpendicular to the circle and therefore is making it rotate. Oh, what is the mass of air passing through it? And it's a windmill. It sweeps a circle. Okay, the wind flows at a v perpendicular to the circle. What does this mean? Velocity v perpendicular to the circle. Okay, मतलब सामने से आ रहा है सर्कल के. हाँ, ऐसे ही लग रहा है, like a face के ऊपर आ रहा है. And what is the mass of the air? What all is given? Assume that the windmill converts 20 and that. How does a windmill work actually? ये पता होना चाहिए. Area भी पता, sweeping in area A. And the blades are there if the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle. What is the mass of air? So air की density कितनी होती है? पता होगी, time t. So पहली बात तो ये है कि हमें पता लगाना है कि mass of the air. How much mass? What is the significance? Physically क्या हो रहा है? If I look into a windmill, what is happening to the blade? ऐसे कुछ होती है ना, wind energy. And if it is a windmill, it is rotating.
So one is rotational motion, which is involved. Okay, so these are rotating, and ये नहीं समझ में आया. Wind is perpendicular to the circle. So which means is it like एंगुलर this? वेलोसिटी निकालनी है क्या? हो सकता है. V is equal to omega r. But पहली बात तो ये है कि in one rotation, if it moves one rotation, so okay, maybe this is a question where the this is air is coming and colliding with it and transferring energy to it. Okay, so if we have to find the, if we know the air molecules are there, so half, so it is m, for example, the mass of the air per second basis, right? So mass of air per second basis जो निकल रहा है, but let's see, half mv square is the kinetic energy striking it, and this is per second basis. This is what it is. So this energy is getting converted into the windmill moving an area, sweeping some area. We don't know what is the angular velocity, but we know it sweeps an area which is A. In that rotation, if you think, right, if you think in terms of rotation, half m, so this is a kinetic energy which is striking it every second, and it sweeps. इसने ये नहीं दिया कि okay, so they sweep a circle of area A in how many seconds? If you sweep a circle of area A, okay, so if we don't know the radius, we know the area. So area is equal to pi r square, and so r is given by a upon pi under root. So if I know the velocity and it's a uniform circular motion, assuming it strikes and v is equal to omega r, v is the velocity with which it strikes and transfers omega to it. Okay, so I know what is omega of the, so in one turn, when it turns, so moment of inertia भी नहीं पता. So first we have to calculate the kinetic energy of the air, but before that we have to find how much mass passes through it. Kinetic energy in time t. Language क्या है? The blade of windmill sweeps out a circle of A. Okay, so we know the radius. Therefore, if the blade sweeps an area A, we know the radius of the blade. So let's say there is only one blade, and we are focusing there. Something strikes it, it rotates and comes back to the same position. When it rotates, it gains, but इसका वो पता नहीं है हमें तो moment of inertia. Energy की terms में what will be rotation? If you rotate, you get half I square, and you rotate. You have to find the mass of the, you have to find the mass of the air. That is your focus. We know the density of the air, okay? अच्छा, एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी भी दी हुई है. डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम. हाँ हाँ, अच्छा, एयर की डेंसिटी भी मालूम है, एरिया भी मालूम है विंड मिल का. द वेलोसिटी ऑफ विंड इज ऑल्सो नोन एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो नोन. ओके, वॉल्यूम से ही कुछ अगर करें हम, वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉट. अच्छा वॉल्यूम दे रखी है ना, कहाँ दिया? 36 है ना एयर की. नहीं, दैट इज एरिया. नहीं वी क्या है? वॉल्यूम. अच्छा नहीं, स्पीड है. अच्छा नहीं नहीं वेलोसिटी. नहीं नहीं नहीं. तो इसमें वॉल्यूम मतलब वेयर इज अ वॉल्यूम, वेयर इज अ 3D फिगर विच इज वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी यूज्ड, ये तो दिख रहा है समवेयर. Volume is generally area into the distance moved, for example, okay? So if I say dV by dt, rate of change of volumes, then it is area multiplied by velocity, okay? So rate of change of volume. But if you sweep a circle, you don't cover a area, right? You cover a you cover a like an area. This is what you cut. You cut that much एरिया स्वीप करते हैं जब आप, यू आर नॉट स्वीपिंग वॉल्यूम्स. डेंसिटी इज देयर. विंडमिल में यू आर,
wind is coming, wind's energy is being converted into rotational energy, and I'm striking it with certain rate. So momentum also is getting transferred, and angular momentum लॉस नहीं दिखाया. 100% एफिशिएंट मशीन है. जितनी भी वो जिस रेट पे भी ने लिखा है, इट्स 25% एफिशिएंट. काफ़ी बेकार है. 25% ऑफ द इनटू, बाकी 75% इज अ वेस्ट. To rotate it by if it sweeps out whatever, if the wind flows 25% of the energy. I think we'll have to think through this. Let's leave it for a while. छोड़ देते हैं, रुक जाओ. नहीं समझ में आया. Where are we missing the point? Okay. Okay, I think this should be interesting because ये वाला जो क्वेश्चन है, विंडमिल का कुछ है जो पॉइंट which we're not able to capture. I'll think क्या होगा. Let's say this. ये लो. So this is solar. Family uses बिल्डिंग पे सोलर पैनल लगे होते हैं तो 8000 watt. ओके, दैट्स योर रिक्वायरमेंट. यूजफुल, जो घरों को देना है. Direct solar energy अच्छा is नहीं, आपको सोलर पैनल का एरिया डिसाइड करना है और आपको सप्लाई करना है हर सेकंड में 8000 जूल. तो छत पे कितनी पर स्क्वायर मीटर बेसिस पे व्हाट इज द सोलर एनर्जी फॉलोइंग ऑन यू? ओनली 200 वॉट्स in 1 square meter. यस, सोलर एनर्जी. और 20% ही सिर्फ इस्तेमाल हो पाती है. मतलब 200 में से सिर्फ 40 वॉट यूज हो रही है. Okay, समझ आ गया मुझे थोड़ा. वो विंडमिल में भी कुछ ऐसे ही होगा, बट स्वीप का कॉन्सेप्ट जो है, वी विल हैव टू थिंक कि स्वीपिंग में एरिया काफी बड़ा होना चाहिए क्योंकि 20% एफिशिएंट है. हाँ, बहुत ज़्यादा. बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए. तो आप 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैदा कर रहे हो यूजफुल पावर? 200, और उसमें से उस 200 का 20% निकाल ले. 40, सिर्फ 40 वॉट मिल रहा है यूजफुल. 40 watt. Every square meter will deliver you 40 watts. So 40 watts is coming from 1 square meter. ये क्या हो रहा है? 200 मीटर, 200 स्क्वायर मीटर. अच्छा, you have directly done it. हाँ ठीक है, 200 स्क्वायर मीटर. Yes. और compare this area to that of a roof of a typical house. नहीं होता इतना बड़ा भाई. 200 स्क्वायर मीटर का मतलब मालूम है क्या है? योर हाउस इज 100 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 50 मीटर का मतलब है 500 फीट. उसकी रूफ की लेंथ कितनी होती है? कुछ नहीं होती, बहुत कम होती है. डिपेंड्स यार. एक 2000 स्क्वायर फीट का हाउस है, फीट का, उसको पहले तो 10 से डिवाइड करो. कुल मिला के वो 200, हाँ बन गया 200 स्क्वायर मीटर. 200 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर इज 3 फीट, 3.33. हाँ ठीक है, हो सकता है. 2000 स्क्वायर फीट का अगर मकान है, स्क्वायर फीट का 200 स्क्वायर फीट का मकान है. रूफ की बात कर रहा हूँ मैं. 2000 स्क्वायर फीट एंड 1 मीटर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर फीट. सो दिस विल बी 200 स्क्वायर मीटर. 2000 फुट का घर 200 स्क्वायर मीटर का घर है. ठीक है, छत पे रख सकते हैं पूरी, लेकिन छत जो है ऐसे से यूज हो जाएगी. हाँ, कंपेयर कर सकते हैं. तो पूरे घर को सप्लाई दे सकते हो अगर पूरे घर के ऊपर ये वाला पैनल मिल जाए जो पर स्क्वायर मीटर, और एफिशिएंसी अच्छी मिल जाए. सो बाय अ गुड क्वालिटी में भी 50% वाला मिल जाए, और पर मीटर स्क्वायर बेसिस पे. हाँ, फिर सन की कितनी पावर है तो यू कैन कंट्रोल दैट, राइट? सन विल गिव यू व्हाट इट विल गिव यू, और थ्रू आउट द डे दिस विल कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो. पीक टाइम पे 200 वॉट दे रहा है, फिर कम हो गया, बढ़ गया, तो एवरेज हो सकता है पूरे दिन में 200 आ रही हो. इंटरेस्टिंग. बट इजी था. हाँ ठीक है, मतलब यहाँ दिख गया, बट आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा आई गॉट लॉस्ट की. तो सर आप एक इंजीनियर हो, था यार, मैं इंजीनियर, मैं आईटी तो पता प्रोफेशनल. होना चाहिए.
nahi, I'm sorry, I'm not a windmill guy. I will have to read how does a windmill work. If I know how a windmill works, does it? I mean, it's area sweeping. How do I convert area sweeping? बट सर आपको ये भी पता चले ना कि विंडमिल कैसे काम करते हैं, तब भी आपको I ये can, क्वेश्चन I नहीं can, रहेगा. I can actually just think of one thing that see area A gets swept in one time interval, right? T. So the rate of sweep is dA by dt, and I can write it as 2 pi r dr by dt. But do I have a fluctuating r? As in ये मेरा blade है, ठीक है, और मैं एरिया स्वीप कर रहा हूँ, तो मेरा रेडियस देखो ये किसी भी जगह पे डी आर बाई डी टी का क्या मतलब है? आई मीन आई कैन टेक अ रेडियस स्टिल हेयर, सो एरिया बीइंग स्वीप्ड, पूरा एरिया जो स्वीपिंग हो रही है वो अगर इतना सर्कल लोगे तो इतना एरिया स्वीप होगा सिर्फ, अगर जी. पूरा ब्लेड लोगे तो इतना होगा. ये सिर्फ मुझे स्ट्राइक करा था कि आई एम डीलिंग अगेंस्ट obviously pura area, but can I do 0 to r and I say this is my rate of change of sweep of area, which is dependent on the radius where you're striking, and matlab main pi r square was an instantaneous reaction and dA by dt some rate, and if it this is the rate of area and 2 pi r, but I couldn't relate it to volume. The air striking it just gives me half mv square kinetic energy. It comes, strikes, makes me rotate is the principle. But यहाँ पे rotational हमने पढ़ा नहीं, तो how do I link it to rotation? We इसमें have फ्लूइड studied डायनेमिक्स uniform. यूज नहीं हो रहे. है? फ्लूइड डायनेमिक्स तो नहीं यूज हो रहा ना इसमें. नहीं नहीं, कोई fluid dynamics नहीं है. V is equal to omega r थोड़ा सा सुनने में लगता है कि यूज हो सकता है, क्योंकि that velocity comes and strikes a circular moving object. So यहाँ पे velocity v है, ये blade को टकरा दिया यहाँ पे perpendicular blade को, but blade को हम striking like this everywhere the radius at which I strike is different, right? So everywhere I strike I have a different sweep area. छोटा circle, बड़ा circle, third circle, fourth circle, fifth circle. So all the this air which is striking a complete surface is creating small circles of its own, हाँ जी. and so half mv square comes and strikes and gives it omega r. So omega is 2 pi by t. Okay, so in one time interval I can sweep complete pi r square in one time interval, right? If I have if I have rate of change of area as 2 pi r dA by dt, and I want to convert it into radius से हटा के I want omega, I can put radius d 2 pi into r की जगह I can put it as time period upon pi का under root into dr by dt, and then time period can be written as 2 pi by omega. So 2 pi so this is time period omega is 2 pi by omega. So I can write this as 2 pi by omega into pi into dr by dt. So my pi also goes away and I get 2 pi dr by dt and pi by omega. So pi cut gaya, maybe 2 by omega. So I'm getting some rate of change of area sweeping with time in terms of rotation, and dr by dt. So how do I've removed this, I brought omega also inside this, and I'm having half mv square, which is causing this rate of change of area. Now how do I convert this rate of change of area into energy? Is essentially in rotational motion it is, or if in a uniform circular motion also it is half I omega square, but I is the moment of inertia. तो वो moment of inertia तो पता नहीं है हमको उसका एक फैन का. It's a rotational mass, like a linear mass. This is a rotational mass. This is equivalent of half mv square. So this is not to be used. Some area sweeping has to be used in this question. I'm not able to establish the relationship. How is this energy? How is the machine working? Area sweeping. How is it resulting in
energy gain, electricity getting produced. You know what? So kinetic energy is getting converted into what type of energy? And then giving electrical energy from there. That machine working is area sweeping. How does it take energy and convert? That is not clear. What is happening? तो मशीन की वर्किंग नहीं आती. सोलर पैनल में इट वाज pretty easy, straightforward. So not too hard. ठीक है. So I think I did not start collision deliberately because I think power और इसकी practice काफी useful रहती है करने में. So next class what we do is we will do collisions, which is in itself a long topic. But हमने पढ़ा हुआ है. We will do a quick revision and then we will start doing numericals. Theory एक बार revise कर लेंगे कि kinetic energy में और momentum दोनों को consider करके किस में kinetic energy का loss होता है. वो हमें बस difference करना है कि inelastic That's all. एक derivation भी आती है उसके अंदर. Prove that final velocity after the collision is given by this formula. वही m1 plus m2 divided by m1 minus m2 लंबा सा फॉर्मूला होता है. दोनों बॉडीज का पोस्ट कोलिजन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का डेरिवेशन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट, और कोलिजन विल आल्सो फिनिश. मेरे ख्याल से और तो इस बुक में व्हाट एल्स इज इट देयर? आई थिंक इट्स देन देयर इज नथिंग इन इट. देन वी हैव टू प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल. बट वी ऑलरेडी डन दैट. कोलिजन के तो हमने कभी नहीं करा. आएगा वो कोलिजन. NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन कोलिजन के ऊपर है. All those things which you said, the bodies will merge with each other, the bodies, car crashing into a truck to तो इन a elastic billiards होते ball. और पता है मतलब we'll quickly go through each of the scenario, draw a chart, say the concept is very clear in our mind what is happening in each of this, and we know example of each one of them. Then we will start doing and say, okay, this is a case of super elastic collision. This is a case of inelastic collision. This is a case of सर elastic collision. जैसे जो बिलियर्ड बॉल्स होती है Yep. वो अगर एक उससे स्ट्राइक करती है तो वो एक इलास्टिक कोलिजन में होता है. Generally, yes. Reality तो ये है कि the sound is produced, so the energy is lost. So it's partially elastic. So coefficient of restitution is not 1, minus 1. It is there is a loss of kinetic energy in sound. There is no perfectly elastic collision. If you mean perfectly elastic होता है, answer is no. ले लेते हैं perfectly elastic होता है. ठीक है? So try some questions on this topic. ऐसा लोड़ा Start with that. बहुत है शुरू के लिए. So next class hopefully we will be completing this chapter also. खत्म हो जाएगा हमारा collision जो है. Because I didn't want to rush through power today. मुझे लगता है power में substantial questions होते हैं, थोड़े difficult type के होते हैं. वो तो अब हम विंडमिल वाला हाँ सर जी एडवांस में डाल दो इसको. नहीं नहीं उसमें भी देर आ सकता है. They will make it more harder to हार्ड है. imagine. हाँ हार्ड थोड़ा पता नहीं difficult क्या होगा फिर. होते हैं. There are questions. ठीक है जी. इंजीनियर भी कर पाएगा फिर तो. Yes.